Hello everyone, welcome to the Slate class of Physics A-levels. As you know that we are studying the chapter of gravitational field. In this class, we will continue with the topic of satellites and we will study energies associated with satellite. Right? Now, satellites are present within the region of gravitational field. In fact, they are under the grip of Earth. Which force is providing centripetal force to the satellite? Definitely the gravitational pull of Earth. Right? So that's why they have gravitational potential energy. As they are moving with certain velocity in their orbits, let's assume this is their velocity v. Due to this velocity, they have another energy and that energy will be kinetic energy. And if we add both, if we add gravitational energy and kinetic energy, we will get the total energy of satellite. Right? So as you can see in this diagram, there is Earth. This is center of Earth, right? Okay, there is a satellite here. This is a satellite. Mass of Earth is represented by symbol capital M and mass of satellite is represented by symbol small m. This is mass of Earth and this is mass of satellite, right? Now these satellites are orbiting Earth in their specified radius, and that is orbital radius. And orbital radius is from the center of Earth to the center of satellite. This is orbital radius r. Right? Now, this satellite has kinetic energy due to its motion and it has gravitational potential energy. And you know the formula of gravitational potential energy already. What is the formula of gravitational potential energy within the field? ये वही फॉर्मूला है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी किया है. यू विल राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Right? You know the expression of gravitational potential energy. Gravitational potential energy of satellite is equal to minus G(m)(m) over r. ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला स्टडी किया. राइट? याद रहे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन होता है and its SI unit is joules. Now, this gravitational potential energy will be maximum at infinity and its value is 0. So within the field, gravitational potential energy is negative. Now we will find out the formula of kinetic energy of satellite. Right? So you are writing heading of kinetic energy of satellite. Let's find out kinetic energy of a satellite. Right? Okay, already you have the expression of gravitational potential energy. अब हम kinetic energy का expression find out कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले से present नहीं है. So here, which force is responsible to provide centripetal force to satellite? Definitely, the gravitational force of Earth is providing centripetal force. So you will write gravitational force is equal to centripetal force, or you can write centripetal force is equal to gravitational force. Centripetal force is equal to gravitational force. Right? What is the expression of centripetal force? You have two expressions of centripetal force now. Centripetal force is equal to mv square over r, and the other expression is mr omega square. You know these expressions from circular motion, right? But here, to find out kinetic energy, हमें kinetic energy यहाँ से कहीं आती हुई नजर आ रही है mv square over r से. So we will select this formula of centripetal force, right? So you will write centripetal force, which is mv square over r is equal to gravitational force, which is g(m)(m) over r square. Right? So आप यहां पर कह सकते हैं कि स्मॉल मैस से कैंसल आउट हो जाएगा. मैस ऑफ सैटेलाइट कैंसल आउट हो सकता है, लेकिन हमने कैंसल आउट नहीं करना. राइट? सो मैस को कैंसल आउट नहीं करना, एक डिस्टेंस को एक डिस्टेंस से cancel out कर देना है. 1 r will be cancelled out with 1 r where r is
orbital radius of satellite. So we are left with this expression. mv square is equal to gm over r. mv square is equal to gm over r. Now आपको यहां से कहीं hint मिल जाएगी कि how you will find the formula of kinetic energy. How you can convert this expression mv square in the formula of kinetic energy just by multiplying it by half. शाबाश. So you will multiply this by 1 by 2. तो अगर आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड पर किया है उसको दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा to balance it out. You will write 1 by 2 on the other side as well. Right? So now you have this half mv square. So you will write kinetic energy is equal to gm over gmm over 2r. gmm over 2r. Now you have the formula of kinetic energy as well. Right? So once again the unit will be joules. Right? So this is the formula of gravitational potential energy. This is the formula of kinetic energy. How you can find total energy of satellite? The total energy or the mechanical energy of the satellite is the sum of kinetic and potential energies. So now you will write total energy of satellite. Total energy, you can refer it as ET, right? So total energy of satellite is sum of gravitational potential energy and kinetic energy, right? So total energy is the sum of gravitational potential energy and kinetic energy. You have the expression of gravitational potential energy minus gmm over r. And kinetic energy, you've just found that kinetic energy is gmm over 2r. Right? Further, total energy is equal to, आप LCM लेंगे, LCM will be 2r. You will write minus 2gm m plus gmm, right? Upon the simplification, you will get the formula of total energy. And that formula is total energy of a satellite is equal to minus gmm over 2r. याद रहे कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जो है वो माइनस में है, नेगेटिव है. So you have this expression of total energy as well. So total energy of satellite is minus gmm over 2r, right? So you have all these three formulas of satellite. ये सारे के सारे formulas आप लोगों को memorize हो जाने चाहिए because you require ample practice to appear in exam. अगर उतनी practice करेंगे ये formula ultimately आपको memorize हो ही जाएगी, right? Just listing them once again, the expression of gravitational potential energy is minus gmm over r. Kinetic energy is plus gmm over 2r. And total energy is minus gmm over 2r. ठीक है? और total energy कैसे आती है? Total energy is sum of kinetic energy and potential energy. Right? Now, two of these energies are negative and one is positive. Which two are negative? Potential energy and total energy. Which one is positive? Kinetic energy. Right? Now, these two of them have same magnitude. I am repeating, same magnitude. When you are considering magnitude, you don't look at the sun. कौन सी दो ऐसी हैं जिनका मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड सेम है? देखें, काइनेटिक एनर्जीज gmm over 2r, total energy is also gmm over 2r. So you will write magnitude of kinetic energy is equal to magnitude of total energy, right? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में 2r नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ r है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिनोमिनेटर जो है वो हाफ है, 2r नहीं है, r है. पोटेंशियल एनर्जी का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली हाफ है. जब डिनोमिनेटर हाफ होता है तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड डबल होता है. ओवरऑल मैग्नीट्यूड डबल होता है. ठीक है? सो
magnitude of potential energy is twice the magnitude of total energy or kinetic energy. ठीक है, so kinetic energy is positive but half in magnitude. ठीक है, total energy is negative but half in magnitude, but potential energy has twice the magnitude. Kinetic energy का magnitude, potential energy का magnitude kinetic energy और total energy के magnitude से double है. So अगर मैं आपको randomly कहूं कि there is a satellite which has potential energy equal to minus 20 units, right? Potential energy is equal to minus 20 units. So what will be its kinetic energy and what will be its total energy? तो आपको ये पता है कि kinetic energy और total energy का magnitude potential energy के magnitude से exactly half होता है. तो आप कहेंगे kinetic energy का sign positive होता है और magnitude potential energy के magnitude से half होता है. So kinetic energy is 10 units, right? What will be the total energy? For total energy, you will add potential energy and kinetic energy. So minus 20 plus 10 is minus 10, right? Minus 10 units, right? तो क्या ये energies of satellite हमेशा ही ये ratio maintain करती हैं? Yes, this ratio is never going to be disturbed. So it means that the ratio of kinetic energy to potential energy to the total energy of satellite is always equal to 1:2:1. और याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है और टोटल एनर्जी का भी जो साइन है वो नेगेटिव होता है, राइट? सो नाउ दिस रेशियो इज +1 ratio -2 ratio -1. You will memorize this ratio. अब there's an important question. अगर सैटेलाइट की एनर्जी रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है, क्या ये रेशियो डिस्टर्ब होगी? नो, दिस रेशियो इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, राइट? नाउ मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं. यू नो ऑल द एक्सप्रेशंस में सारे के सारे एक्सप्रेशन दोबारा से लिख रहा हूं. देखें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/2r. Potential energy is equal to -gm/r and kinetic energy is equal to +gmm/2r. Right? Now in the question it is given that energy of satellite reduces. Energy of satellite reduces. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्क्रीन पर एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, which is representing energy. This timeline is representing energy, right? So this is 0, this is negative numbers, and these are positive numbers, right? अच्छा, अब अगर टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली रिडक्शन किस साइड पर है? लेसर नंबर्स आर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो इस साइड पर एनर्जी रिड्यूस होगी और इस साइड पर एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट? सो इफ द एनर्जी इज रिड्यूसिंग, विच एनर्जी इज रिड्यूसिंग? आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो आप टोटल एनर्जी को ही समझेंगे टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रही है. सो बेसिकली अगर टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव बिकॉज लेस नंबर्स आर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन्स, राइट? इट मीन्स दैट total energy is decreasing. Total energy of satellite is decreasing, right? So it has negative sign. इसका मतलब ये है it is becoming more negative. This energy is becoming more negative because negative numbers are at the left hand side of the number. ठीक है, reduction हो रही है, it is going towards more negative. अच्छा, अब you will tell me how this expression can become more negative. This expression can become more negative अगर इसका magnitude increase हो with a negative sign. Yes, negative sign is there, but magnitude तब increase होगा जब इसका denominator decrease होगा
और डिनोमिनेटर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इसका ऑर्बिटल रेडियस डिक्रीज होगा, which means that it is coming closer to Earth, right? So what will happen to its orbital radius? अगर सैटेलाइट की एनर्जी रिड्यूस हो रही है, so its orbital radius is reducing. Its orbital radius is reducing. तो हमें दो बातें पता चल गई, टोटल एनर्जी भी कम हो रही है, ऑर्बिटल रेडियस भी कम हो रहा है. अब आपको पता चल गया कि ऑर्बिटल रेडियस रिड्यूस हो रहा है. यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखिए. अगर ऑर्बिटल रेडियस रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है. डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा, सो दिस होल मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज एंड विल बिकम मोर नेगेटिव. इट मींस दैट potential energy will also reduce. Potential energy will also reduce, which means that it will become more negative. And what about kinetic energy? Kinetic energy is there with a positive sign. और जब radius reduce होगा, ये सारा का सारा magnitude जो है, this magnitude will increase. So, जब टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, रेडियस रिड्यूस होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ अ सैटेलाइट हैज टोटल एनर्जी ऑफ लेट्स से 100 यूनिट्स, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज टोटल एनर्जी हैज नेगेटिव साइन विद इट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी minus 200 and its kinetic energy will be plus 100, right? This is the ratio which always maintains. So if the total energy is reducing and let's say it is becoming minus 200, right? What will happen to potential energy? Potential energy will reduce but by a factor of 2. ठीक है, so it will become minus 400 and kinetic energy will increase by the factor of 1, so it will become plus 200. ठीक है, this ratio of energy which is total energy to potential energy to kinetic energy, this ratio is not going to change. This will remain minus 1 ratio minus 2 ratio plus 1. ठीक है, so अब आपको पता चल गया कि टोटल एनर्जी रिड्यूस हुई है, लेकिन एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम से आपके पास टोटल एनर्जी आ रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज minus 400, काइनेटिक एनर्जी इज plus 200. बाय एडिंग देम यू आर गेटिंग minus 200, राइट? दिस रेशियो इज नॉट डिस्टर्ब, दिस विल स्टे इंटैक्ट, राइट? सो नाउ वी नो दैट इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट reduces, it comes closer to Earth. Its orbital radius decreases, its potential energy decreases by a factor of 2, right? But kinetic energy increases by a factor of 1. So, overall combination से आपको पता चलेगा कि total energy will decrease by a factor of 1. देखें, potential energy 2 के factor से decrease हुई, 1, 2, और kinetic energy 1 के factor से increase हुई. तो total energy is decreased by a factor of 1, right? So now we are in a situation to do a question related to satellite. Here we have a question in front of us. Let's do this question. So this question is associated with the energies of satellite. The question says that a satellite of mass ms is in a circular orbit of radius x. याद रहे, जनरली रेडियस जो है r से रिप्रेजेंट होता है. इस क्वेश्चन में रेडियस इज बाय सिंबल x. द अर्थ मे बी कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर विद मास कैपिटल M concentrated at its center. Part A1 is show that kinetic energy of satellite is given by the expression kinetic energy is equal to gmms over 2x. So here we have to derive an expression for kinetic energy. We will write centripetal force is equal to gravitational force. Centripetal force is equal to gravitational force, right? Centripetal force is mv square over r. M is mass of satellite, v square
over r, orbital radius is x, is equal to g, mass of Earth, mass of satellite divided by x square, right? 1x will be cancelled out with 1x, right? Mass of satellite को cancel out नहीं करना. ms, mass of satellite, multiplied by velocity of satellite is equal to g m, mass of satellite divided by x, right? अब इस एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है? वी हैव mv square, we just have to add an extra half with it, so it becomes half mv square. और दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So here you have the expression of kinetic energy which is equal to g m ms over 2x. ठीक है, आपने एग्जैक्टली वही सिंबल्स यूज करने हैं जो एग्जामिनर ने यूज किए. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है स्टेट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जी एम एम एस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. वी नो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम एस ओवर आर. आर नहीं बल्कि एक्स, बिकॉज यहां पर डिस्टेंस जो है वो सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ. Using your answer in 1 and 2, derive an expression for total energy of satellite. So, you know that total energy of satellite is sum of kinetic and potential energy. So, total energy of satellite is equal to sum of kinetic and potential energies. So, kinetic energy is G M ms over 2x plus potential energy is minus G M ms over x. You will take LCM. You will simplify it and you will get to know that overall expression of total energy is minus gm ms over 2x, right? हमने इसी क्लास में एक्सप्रेशंस को अलग से स्टडी किया है, right? Satellite. So you know that total energy of satellite is sum of kinetic and potential energy. So total energy of satellite is equal to sum of kinetic and potential energies. So kinetic energy is G M ms over 2x plus potential energy is minus G M ms over x. You will take LCM, you will simplify it and you will get to know that overall expression of total energy is minus G M ms over 2x, right? हमने इसी क्लास में ये एक्सप्रेशंस को अलग से स्टडी किया है, right? Okay, now in part B, a small resistive force acting on satellite causes the radius of its circular orbit. 5 मिनट रह गए, टाइम नोट कर. नहीं चलते रहने दो, टाइम नोट कर लो क्योंकि वो बीच में हुआ है. मैंने हल्का सा सर का इशारा भी किया था कि पता चल गया. टाइम नोट कर लो. Now in part B, a small resistive forces act on the satellite cause the radius of circular orbit to change. 2 मिनट रहे. अब नहीं है, बस बंद कर यहाँ से एडिट कर दे. वीडियो बंद कर दे. लिटरली वीडियो बंद कर दे. वीडियो बंद कर दे. हेलो दोस्त. अच्छा जल्दी आ. अच्छा. Now in part B, a small resistive forces act on a satellite cause the radius of circular orbit to change. अब एग्जामिनर बड़ा तेज है, उसने आपको ये नहीं बताया कि रेडियस इंक्रीज होगा और रेडियस डिक्रीज होगा. यूज योर आंसर इन ए टू स्टेट फॉर द सैटेलाइट whether each of the following quantities will increase, decrease or remain constant. So total energy. Expression of total energy is minus G M M over 2x, right? तो आपको पता है कि रेडियस डिक्रीज होगा, टोटल एनर्जी ने तो रिड्यूस ही होना है. टोटल एनर्जी विल डिक्रीज. अगर टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर जो है, मतलब इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव ना, तो डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज करेगा. सो रेडियस ऑफ द सैटेलाइट विल डिक्रीज. रेडियस विल ऑल्सो डिक्रीज. Now what about potential energy? Potential energy का क्या एक्सप्रेशन है? Potential energy is equal to minus GMM over x. अगर रेडियस
डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, ये ओवरऑल वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. इट मीन्स दैट दिस टेंशन एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज. Tension energy will also decrease and kinetic energy is equal to plus gmm over 2x. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के जो डिनोमिनेटर में है 2x है और इसका साइन प्लस है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद प्लस साइन, सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. राइट, टोटल एनर्जी will decrease, radius will decrease,